Good morning, students. In my previous lecture, we have already discussed about the close packed structure in three-dimensional arrangement. So, in three-dimensional arrangement, we draw the picture for simple or primitive unit cell, that is for FCC and that is for BCC. So, in simple, we know the packing efficiency is 52.4%. In BCC, the packing efficiency is 68%. And in FCC, the packing efficiency is 74%. In simple, the coordination number is 6. In BCC, the coordination number is 8. And in FCC, the coordination number is 12. In this lecture, and now I am going to derive the packing efficiency for different type unit cells. Different type of unit cell. So what is packing efficiency? So packing efficiency कहले हमें कौन बुझुचे? That is the total volume or total space occupied by the number of spheres. That is total space occupied by the number of atoms in a close packed arrangement in any mode. Any mode means either in simple, BCC or in FCC. Any mode, कौनसी भी arrangement रे जदि उड़े close packing 3D arrangement नौचे तले सही जगह रे हमारा total volume entire crystal रा कितने space हमारा occupy करुचंदी हमारा atoms माने तो ये जदि crystal को था हमें चिंता करिबा तो उड़े crystal रे efficiency हमको देखिबा difficult हबा तो सही थोड़ा बुझीबा भी कष्ट हो जिवो कारण क्रिस्टल केते बड़ साइज रो नउचे ता भीतर केते एटम्स प्रेजेंट अछंदी से जिंस हमको डिटरमाइन करबा डिफिकल्ट हबो ता माने हमें पैकिंग एफिशिएंसी जदी कंसीडर करूचे जे कोनोसी गोटे टाइप रो यूनिट सेल नउचे सपोज हमें सिंपल नबा तो सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल रे पैकिंग एफिशिएंसी केते देखिबा ता माने सेथि जति तार पैकिंग एफिशिएंसी रहबो ताले सही एंटायर क्रिस्टल तार एफिशिएंसी सेतिकी मेंटेन हे जिवो ता माने इन दिस सेक्शन we have to determine the packing efficiency for different type unit cell. So packing efficiency is mu kon kahili the total volume occupied by the atoms upon total volume of the unit cell. गोटे यूनिट सेल जिते भी अच्छी तो से यूनिट सेल रो केते जगह आमर एटम्स द्वारा ऑक्युपाई करूचे आउ बाकी केते स्पेस आमर गैप रहउची एम्प्टी स्पेस रही जाउची तो सेटा आमर रहला पैकिंग एफिशिएंसी एंड दिस इज योर फ्रैक्शन फॉर्म रे आसीला जदी ताको हमें मल्टीप्लाई करूचे परसेंटेज दैट इज योर 100 रे मल्टीप्लाई करि दउचे ताले सेठी हमें पाई जिबा पैकिंग एफिशिएंसी दैट इज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ठीक अछि सो या को हमें 100 रे मल्टीप्लाई कर दबा 100 रे मल्टीप्लाई कले वी दैट इज we determine the packing efficiency. So first to determine the packing efficiency, this is the total volume occupied by the atoms divided by total volume of unit cell. गोटे यूनिट सेल रो एंटायर वॉल्यूम रू केते वॉल्यूम हमर ऑक्युपाई करछंदी एटम्स इनटू 100 कले हमें पाउचे पैकिंग एफिशिएंसी एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज पैकिंग फ्रैक्शन. सो फ्रैक्शन पाइला परे आमे इनटू कर दबा 100 रे ताको जतले मल्टीप्लाई करबा आमे पाइबा एफिशिएंसी. सो पैकिंग एफिशिएंसी पाई बतन ऊपर पार्ट को हमें सिंपलर फॉर्म ने जेबा दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द एटम टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम्स ताको हमें नबा कोन वॉल्यूम ऑफ ईच एटम गोटे जे कोनसी जो एटम नबा से एटम रो वॉल्यूम हमें देखिबा इनटू करबा नंबर ऑफ एटम्स पर ईच यूनिट सेल तो गोटे यूनिट सेल केतेटा एटम प्रेजेंट अछंती तले सेथरो जदी हमें जानूचे तले हमें पाइबा एंटायर वॉल्यूम ऑफ द एटम्स ठीक अछि. गोटे यूनिट सेल भीतर केतेटा एटम अछि तो हमें जानचे सिंपल रे z वैल्यू 1 बीसीसी पाई z वैल्यू 2 एफसीसी पाई z वैल्यू 4 नौथिले तो सेथरो हमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल पाइबा ताकू जदी हमें देखि दबा वॉल्यूम ऑफ ईच एटम प्रत्येक एटम रो वॉल्यूम हम पाखरे जाना अछि एंड केतेटा एटम जाना अछि तले सेथरो हमें ताकू मल्टीप्लाई करले पाइबे टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. Clear? This is your formula for packing efficiency. Now we have to derive for this
simple unit cell पाई आमे derive करिबा. So for simple unit cell पाई आमे consider करिबा. This is your arrangement हमर रहिला. So ये रहिला हमर edge length आमे नउचे a. So edge length आउ r भितरे edge length and radius भितरे आमे already derive करि सारिचे relation. And simple पाई आमे edge length पाउचे कोन a is equal to 2r. For simple a is equal to 2r. And we already know for simple z is equal to 1. That is 1 atom present per each unit cell in case of simple. So the packing efficiency for simple is बुझिबा बिले packing efficiency is volume of atom. So the atom हमर तर shape कोन spherical in shape. तमन तर volume गुडे sphere of volume केते हमर that is your 4/3 pi r cube. So volume of each atom is 4/3 pi r cube ने गले. गोटे स्पीयर पाई आमे फार्मूला जानी छे तार वॉल्यूम आमे डिटरमाइन करछे कोन 4/3 pi r cube. रेडियस रहला r into number of atoms per each unit cell that is z. For simple पाई z केते पकेले 1 divided by volume of the unit cell. So unit cell रो वॉल्यूम आमे केते नउचे a cube. जदि एज लेंथ हमर रहला a तले वॉल्यूम केते हबो a cube. सो बतन a को जेतु एटा ऊपर पार्ट हमरा r रे रहिला 4/3 pi r cube रहिला. एठी हमें r रे नै छे ये a रे नै छे ता माने एठी हमें ताको कंसीडर करबा a को हमें r रे कन्वर्ट कर देबा जहा पर हमको कैंसिल करके सॉल्व करिबारे सुविधा हो जिवो. सो द पैकिंग एफिशिएंसी इज 4/3 pi r cube into 100 भी कर दबा मल्टीप्लाई कर दबा into this is your 1 divided by a cube is equal to केते 2r whole cube. 2r whole cube. So 2r whole cube means केते 8r cube. Clear? Into 100 which is equal to 4/3 pi r cube divided by 8r cube into 100 which is equal to r cube cancel हो गला हमरा. Then रहिला 4/3. So 4 divided by 8 केते पाइले हमें 2. So एठी हमर केते पाइले बिले this is your pi and ये रहिला हमर 2. Clear? So एठी जो रिलेशन हमें नउचे ऊपर रहला 3. सो हमर रहला केते pi/6 into 100. सो हम बखरे मिलला pi/6 into 100. तो सो pi/6 कोन तर पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग फ्रैक्शन रे हमें into 100 कले हमें पाई जिबा पैकिंग एफिशिएंसी. तो पाई रो वैल्यू पके दियो 3.14 divided by 6 into 100. सो इट सॉल्व कला पर हमको मिलिबा केते 0.524. 3.16 को डिवाइड करो 6 रे मिलु छ हमको 0.524 into 100 मींस केते मिलला 52.4%. तो तुमको जदी पचरा जीवो व्हाट इज द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ इन केस ऑफ सिंपल यूनिट सेल दैट इज योर pi/6 or 0.524. If somebody is asking for that is a packing efficiency, then the efficiency is 52.4%. Clear? So the efficiency रहला 52.4%. What is the empty space? Empty space आउ केते हमको मिलला अवेलेबल गैप केते रहि जाउची एती तो efficiency means atoms माने 100 रु 52.4% ऑक्युपाई करछंदी त माने गैप केते हमर रहउची तो 100 minus 52.4% कर दबा त माने empty space हमर रहिला in simple empty space is केते 47.6%. Clear? So ये रहिला simple empty space 47.6%. Efficiency रहिला 52.4%. Fraction रहिला 5/6 or 0.524. Clear? So ये रहिला हमरा for simple unit cell. Then we derive the
packing efficiency for BCC, body centered, for BCC पाई हमें डिराइव करबा. So already BCC केस रे body centered पाई हमें एज लेंथ आउ रेडियस भीतर रिलेशन ड्रॉ कर सारीचे. एगेन आउ टिके भी ताको देखि दबा जदी देखो ये रहला हमर ए बी सी. ए बी को हमें नैथिले कोन ए बी सी को नउचे केते ए. तले ए सी केते √2a. क्लियर. सिमिलरली ए सी डी ट्रायंगल पाई ए सी जदी हमर रहला √2a, सी डी हमर रहला केते ए. तले ए डी केते बिले √3a. एटा हमें ऑलरेडी कहिचे दिस इज योर बॉडी डायगोनल. सो बॉडी डायगोनल केते रहला डिस्टेंस √3a. ठीक अछि. सो याकु जदी हमें रेडियस सहित रिलेट करिबा ए जो डिस्टेंस को एडी डिस्टेंस हमें पहले √3a. √3a को जदी हमें रेडियस सहित कंसीडर करिबा तो मार्कर रेडियस कोन रहला a to this point. This is your r. Then this point to this point also r. This point to this point also r. Then this point to this point also r. माने केतरा r रहला 1 2 3 4 radius रहला. That is this is your diameter and this is your radius means here √3a is equal to 4r. AD is equal to √3a which is equal to 4r, which implies a is equal to 4 by √3r. ये रहला हमर एज लेंथ आउ रेडियस भीतर हमर रिलेशन जोटा कि हमें ऑलरेडी भी डिराइव करिचे. वर्तमान मध्ये हमें डिराइव कर देले a is equal to 4 by √3r. क्लियर. सो वर्तमान हमें जिबा पैकिंग एफिशिएंसी डिराइव करिबा. सो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू exactly volume of the atom हमर केते रहला 4/3 pi r cube. number of atom रहला BCC पाई केते 2. ZG equal to 2. BCC पाई ZG equal to केते 2. number of atoms रहला 2. next हमें नैचे that is your volume of the unit cell, total volume of the unit cell. so unit cell volume केते AQ. बतने AQ जगह रे हमें पुट कर दबा R because ऊपर रहला हमरा R. सो बतन देखि दबा that is your 4 by √3 R रो whole cube into efficiency करिबा तो मल्टीप्लाई करिबा 100. देन देखिबा ताको सब कैंसिल कर दबा. ये रहला हमरा 4 by 3 pi r cube. this is into 2 by 4 cube केतेला 6 4 into 4 into 4. this is your 64 divided by √3 whole cube. so √3 into √3 into √3. this is your 3√3 r cube. clear. into 100. so we cancel कर दबा. so first r cube cut. then देखिबा एठी रहला 4 into 2 8. 4 into 2 8. ये रहला 64. so एठी रह गेला केते 8. ठीक अछि 8 8 जा 64. then now 3 and this is 3 काट देले 3. तो बतन एठी रहला 8 एठी रहला हमर √3. तो ये उल्टी जीवा ता माने हमर केते हे गेला √3 by 8 and अछि केते पाई. √3 by 8 pi into 100. तामान जदि तुमको पचरा गला पैकिंग फ्रैक्शन केते कोन कहबो √3 pi by 8. दिस इज योर पैकिंग फ्रैक्शन. देन हमें वैल्यू पुट करबा पाई रो वैल्यू पुट कर दबा √3 रो वैल्यू पुट कर दबा. ताले एफिशिएंसी देखिबा. सो पैकिंग एफिशिएंसी इज √3 रो वैल्यू पाई रो वैल्यू पुट कर देला परे हमको मिलिबो. ताको सॉल्व कर दियो 8 रे डिवाइड कला परे this value becomes 0.68 into 100 कर दबा. so 0.68 into 100 कर देले तार एफिशिएंसी केते बाला 68%. 68%. so packing efficiency ला 68%. ता माने empty space केते रहला पिले empty space रहला 100 minus 68. so this is your 32%.
empty space is equal to 32%. Clear? So एति रहला हमर BCC रे पैकिंग एफिशिएंसी. So देखिबा BCC पाई हमर रिलेशन नेले AD, that is the distance is √3a which is equal to 4r, and here A is equal to ताले केता हबो 4 by √3r, and for BCC Z is equal to 2. Then the packing efficiency is 4 by 3 pi r cube, that is the volume of the atom, into number of atom rahila 2 divided by volume of the unit cell. So unit cell volume pai hame put कर देले 4 by √3 r whole cube into 100. तो याको solve कले packing fraction केते पाइले √3 by 8 pi into 100 कले √3 8 pi को हमें जतले solve करछि हम पाखरे value रहला 0.68 into 100 which is equal to 68%. So the empty space is equal to 32%. ये रहला हमरा BCC. नेक्स्ट हमें फोकस करबा FCC पाई. सो FCC पाई हमें एतला अरेंजमेंट देखिबा. सो we draw the picture for FCC here. सो एफसीसी पाई हमें कौन करिया फेस डायगोनल करिबा. सो फेस डायगोनल हमें ऑलरेडी भी से भी रिलेशन दे सारी छे. अगेन जदी ड्रॉ करू छे ठीक अछि. क्लियर. सो सपोज दिस इज A B C. So AB is as length A, BC is also A, so AC is √2A. So here AC is √2A which is equal to, this is your R, again this is R radius, this is also R and this is also R. So this is your 4R. Clear? So here A is equal to how much? 4R by √2. So solve कर दबा 4 pi हमें represent करचे 2 into 2r divided by √2. So this is also A is equal to 2√2r. हमें कट कर दबो चा. So this is your √2 रहला. So हमर रहला A is equal to 2√2r. ए रिलेशन हमें ऑलरेडी डिराइव भी करि सारी छे. So A is equal to 2√2r. मतलब देखिबा packing efficiency for FCC. So packing efficiency is 4 by 3 exactly same. 4 by 3 pi r cube, that is your volume of the atom, into number of atom, that is for FCC we know Z is equal to how much? Z is equal to 4. Then the volume of the unit cell, that is your AQ. So AQ जगह हमें put कर दबा 2√2r which the whole cube. So solve कर ले packing efficiency is equal to 4 by 3 pi r cube into 4 divided by 2 cube, means 2 into 2 into 2, that is your 8 into √2 whole cube, that is √2 into √2 into √2, again 2√2 into r cube. Efficiency करिबा तो 100 रा को मल्टीप्लाई करिया. फ्रैक्शन कले सिंपल एति के हमें डिवाइड कर देले हमें फ्रैक्शन पाई जिबा. सो पैकिंग एफिशिएंसी इज ताको काटी दबा में r क्यू तला ऊपर कटि गला. So this is 4, again 8, this is your 2. Then amar kon paile pi this is 4 2 katla. This is amar hela pi by √2 into 3√2. Pi by, this is your 3, a portion thila 3. This is your √2, pi by 3√2 into 100. So what is your packing fraction जदि पचरा जीवो कोन लिखिबो pi by 3√2 into 100 जदि consider कोचे आम पाइबा packing efficiency. So when we put the value for pi and √2, so the efficiency is, packing efficiency is 0.74 into 100.
that is equal to packing efficiency is 74%. Efficiency is 74%. So the empty space here, available space is equal to 26%. So तुमको either efficiency पचरा जिबा or empty space केते vacant space available रहउची in FCC. जदि efficiency पचरा जाउची त लिखिबो 74%. जदि empty space available space पचरा जाउची लिखिबो 26%. So this is all about your packing efficiency. So what is packing efficiency? The total volume occupied by the number of atoms in a close packed arrangement in any mode. Any mode means either in simple or BCC or in FCC. Is known as its packing efficiency. So for packing efficiency, the formula is total volume occupied by the atoms upon total volume of the unit cell into 100. Then for calculating total volume of the atoms, we have to consider the volume of each atom into number of atoms per each unit cell divided by total volume of unit cell into 100. So for simple, here the relation is A is equal to 2R, and here for simple Z is equal to 1, that is the number of atom per simple is 1. So for calculating packing efficiency, so this the volume of atom is 4 by 3 pi r cube into number of atom is 1, and the volume of the unit cell is AQ, and we have to put AQ जगह हमें put करिबा 2R. So 4 by 3 pi r cube into 1 by 2R whole cube. So ताको solve कले हमें पाउचे केते 0 pi by 6 is your packing fraction, and when we put the value for pi, the value is 0.524. This is your packing fraction. Remember, this is your packing fraction कहले एतिक लेखिबो. Efficiency कहले 100 multiply कर देले हमें पाउचे 52.4%, and the available space is 47.6%. And in BCC, body center by I represent करचे AD. This relation is your body diagonal, and for body diagonal AD is equal to 3A, which is equal to 4R. 4R हमें नौचे तले A is equal to 4 by root 3R. So the packing efficiency is, volume of each atom is again 4 by 3 pi r cube into number of atom in BCC is 2 divided by this A 4 by root 3R whole cube into 100. So by solving, this value becomes root 3 by 8 pi into 100, and when we put the value for root 3 and pi, the value is 0.68 into 100, and the efficiency is 68%, and the empty space available is here 32%. In BCC, the efficiency is 68% and empty space available is 32%. एतिक space हमरो gap रहिबो. Then in FCC पाई हमें ले here AC, this is your face diagonal. FCC case रे face ro center atom रहिला. So here the face diagonal AC becomes root 2A. So AC is root 2A. Again root 2A हमें कितना रहिला? This is your radius. Again radius. So this is your 4R. So root 2A is equal to 4R. So A is equal to 2 root 2R. So when we put the value for packing efficiency, so packing efficiency is volume of atom is 4 by 3 pi r cube into number of atom is 4 divided by AQ, which is equal to 2 root 2R whole cube into 100. So by solving, the packing efficiency or the packing fraction is pi by 3 root 2 into 100. So pi by 3 root 2 is 0.74 into 100. So efficiency is 74% and the empty space is 26%. Here the packing fraction is pi by 3 root 2, that is also equal to 0.74, and the efficiency is 74%. So available space is 26%. So this is all about your packing efficiency for different type unit cell. This is for simple, body centered and FCC. And आमर HCP पाई आम कोर्स रे सेडा रिप्रेजेंट नाही. जदि तुमको बाय चांस के शॉर्ट क्वेश्चन हिसाब रे पचार जाउची, सो आमे ऑलरेडी कहिचे FCC रो एफिशिएंसी 74%, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, HCP रे मध्य कोऑर्डिनेशन नंबर 12 रहबो,
पैकिंग एफिशिएंसी मध्य हमर से 74% रहइबो. दिस इज फॉर योर ओनली शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क. सो एतिकी कंप्लीट हला हमर पैकिंग एफिशिएंसी. थैंक यू.